तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे और आज के थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो देखो ये सब वाइवा में भी बहुत पूछते हैं। देखो क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसेस द गिवन इनपुट एंड जनरेट्स आउटपुट यूजफुल। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर क्या है तो बताइए। A computer accepts input in different forms. क्या हुआ, डेटा रेफर टू द रॉ डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए डेटा की जरूरत है। एंड प्रोग्राम्स रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन सम सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल मैनर। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? क्लियरली आवाज नहीं आ रही है सर। तुम्हारे यहाँ कुछ होगा, यहाँ से आवाज तो पूरी जा रही है, कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारी तरफ। इधर तो पूरी फुल साउंड में जा रही है आवाज। अभी ठीक आ रहा है सर, जब पढ़ा रहे तो ठीक आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। द मेन टास्क ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू प्रोसेस द गिवन इनपुट ऑफ एनी टाइप इन एन एफिशिएंट मैनर। Therefore, it is also known by various other names such as data processing unit, data processor and data processing system. तो इसका डेफिनेशन आते हैं तो वाइवा में डेफिनेशन बहुत से बच्चों से पूछते हैं, इसलिए इसको तुम लोग को तैयार कर लेना है। ये मैटर भी तुम्हारे पास मिल जाएगा। जैसे फिर है, ए कंप्यूटर इंक्लूड्स वेरियस डिवाइसेस, तो उन डिवाइसेस में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। ये देखो फिगर में दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। It is the processor of the computer that is responsible for controlling and executing instructions in the computer. It is considered as the most significant component of the computer. It is brain, यही main part समझ लो है, brain of the computer है। मॉनिटर क्या हो गया, स्क्रीन है which displays information in visual form। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। After receiving the video signals from the computer, कीबोर्ड और माउस तुम लोग जानते हो। These are the devices which are used by the computer for receiving input from the user। यूजर जैसे हम लोग दे रहे हैं इनपुट, तो उनके लिए कीबोर्ड और माउस की जरूरत है। फिर स्पीड, ए कंप्यूटर इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन सॉल्व लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन फ्यू सेकंड्स। बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इसीलिए कंप्यूटर बहुत यूजफुल है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर जनरली डिपेंड्स अपॉन इट्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। फिर स्टोरेज कैपेसिटी है, a computer can store huge amount of data in its different storage components in many different formats। जैसे इसमें ड्राइव रहता है, CDE ड्राइव है, तो उसका क्या कैपेसिटी कितना जीबी का है, वही उसका स्टोरेज कैपेसिटी है। द स्टोरेज एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। फिर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स विद नो एरर। कोई एरर नहीं रहता है, जो उसमें डाटा दिए हैं वही डाटा हमें दिखाएगा। वर्सेटाइल है, computers are versatile machines, they can perform many different tasks and can be used for many different purposes। simultaneously वो कई काम कर लेते हैं। फिर diligence है, computers can perform repetitive calculations any number of times with the same accuracy। same result तुम्हें मिलेगा with same accuracy। तो ये थोड़ा हो गया कंप्यूटर के बारे में। फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, इसका जरूरत नहीं है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर तुम्हें देखना है। इसके बाद आता है तुम लोग का जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कभी भी इसका क्वेश्चन पूछ देता है कि जो जनरेशन है कंप्यूटर के उनके बारे में बताइए। ओवर द इयर्स वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस वेर इन्वेंटेड दैट इनेबल्ड द पीपल टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कई जनरेशन में बांट दिया है इसको। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इज ऑफन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज लिस्टेड बिलो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरह से करके बांटा हुआ है। देखो फिफ्थ जनरेशन तक है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, the first generation computers were employed during the period 1940 to 1956। These computers used the vacuum tubes technology for calculation as well as for storage and control purposes। तो यहाँ पे क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। Therefore, these computers were also known as vacuum tubes और thermionic walls based machine। देखो ये फिगर 1.5 दिया है, वैक्यूम ट्यूब का फिगर दिया है।
This figure shows the vacuum tube used in first generation computers. It is made of glass and contains filaments inside it. देखो बाहर कवर ग्लास है, अंदर फिलामेंट्स है. The filaments when heated generate electrons. जो फिलामेंट को जब ये रॉड है जब इनको गर्म करते हैं तो it generates electrons which eventually help in the amplification and de-amplification of electronic signals. The input out and output medium for first generation computers was the punched card and printout respectively. Some examples of first generation computers are ANIAC, EDVAC, EDSAC and UNIVAC. The following are the two major advantages of first generation computers. पहला क्या है? These computers were the fastest computing devices of their time. And second, these computers were able to execute complex mathematical problems in an efficient manner. तो ये तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए बेसिक हो गया. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है. बेसिक मोटा मोटा जान लो, इस पे तैयार कर लेना. वाइवा में भी पूछ सकता है और ये एग्जाम में भी. The second generation computers were employed during the period 56 to 63. The main characteristics of these computers was the use of transistor. पहले में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब और इसमें क्या हुआ? ट्रांजिस्टर in place of vacuum tubes in building the basic logic circuit. The transistor was invented by Shockley, Brattain and Bardeen in 1947, for which they won the Nobel Prize. Transistor is a semiconductor device that is used to increase the power of the incoming signals by preserving the shape of the original signal. ये तुम लोग पढ़े होगे ट्रांजिस्टर का फिजिक्स में. ये है, इसमें तीन पैर होते हैं, एमिटर है, कलेक्टर है और बेस है. दिस इज ट्रांजिस्टर. It has three connections which are emitter E, base B and collector C. Sent through the base of the transistor is the gate through which the signal needed to be amplified is sent. The signal sent through the base of the transistor is generally a small flow of electrons. Therefore, the base terminal also acts as the input gate for the transistor. The collector of the transistor is used to collect the amplified signal. The emitter of the transistor acts as the output gate for emitting the amplified signal to the external environment. देखो ये फिगर दिया है, ये इसका थोड़ा बेसिक जानकारी हो गया सेकंड जनरेशन का. इसको तुम लोग को लिख लेना है, कॉपी में अपने तैयार कर लेना है. इनका एग्जांपल्स क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर PDP-8, IBM 1401 and IBM 7090. And the following are the advantages of second generation computers. के advantage क्या है? They were the fastest computing devices of their time. ठीक. They were easy to program because of the use of assembly language. They could be transferred from one place to other very easily because they were small and lightweight computing devices. Transistor बहुत छोटा रहता है साइज में. They required very less power in carrying out their operations. They were more reliable as compared to first generation computers and hence did not require maintenance and regular intervals of time. Maintenance नहीं चाहिए ज़्यादा. इसके बाद फिर कुछ limitations उनका दिया हुआ है, देख लेते हैं. The following are the limitations. The input and output media for these computers were not improved to a considerable extent. They were required to be placed in air conditioned places. लेकिन अभी जो कंप्यूटर है उनको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है. और लिमिटेशन क्या है? The cost of these computers was very high and they were beyond the reach of home users. They were special purpose computers and could execute only specific applications. इसके बाद है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर. The third generation computers were employed during the period 64-75. The major characteristic feature of third generation computer system was the use of integrated circuits. पहले में vacuum tube, दूसरे में transistor, तीसरे में integrated circuit. The IC technology was also known as microelectronics technology. ICs are the circuits that combine various electronic components such as transistor, resistor, capacitor, etc. Integrated circuit एक तरह का plate होता है, उसमें circuit बने रहते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर लगा देंगे, रजिस्टर लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे onto a single small silicon chip. The first IC was developed by Jack Kilby and Robert Noyce in the year 1958. अब ये देखिए, ये कंप्यूटर इसका चिप का आपका फिगर दिया, आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट का. ICs were superior to vacuum tubes and transistors in terms of cost and performance. The cost of ICs was very low and the performance was very high because all the electronic components were arranged very close to each other. They also required very low power for performing their operations. Therefore, the use of ICs in third generation computers made them smaller, faster, more efficient and more reliable than the first and second generation of computers.
Some examples of third generation computers are NCR 395, B6500, IBM 370, PDP 11 and CDC 7600. यही पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल दीजिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का. And the following are the merits of the third generation computers. First क्या है, they were the fastest computing devices as compared with first and second generation. The computational time for these computers was also reduced to great extent. The computational time for these computers was usually measured in nanoseconds. They were very productive because of their small computational time. They were easily transportable from one place to another because of their small size. They used high-level languages. High-level language is a computer programming language that is independent of the machine details. And फिर है, they could be installed very easily and required less space for their installation. They were able to execute any type of application, such as business and scientific applications. They were more reliable and required less frequent maintenance schedules. और कुछ disadvantages क्या है? The storage capacity of these computers was still very small. The performance of these computers degraded while executing large applications involving complex computations because of the small storage capacity. And the cost of the computers was very high. They were still required to be placed in air-conditioned places. तो थर्ड जनरेशन के लिए भी हमें एयर कंडीशनर की जरूरत थी. इसके बाद है fourth generation computer. The fourth generation computers were employed during 75-89. The invention of large scale integration LSI technology and very large scale integration VLSI technology lead to the development of fourth generation computers. However, these still used the IC technology to build the basic circuits. The LSI technology allowed thousands of transistors to be fitted onto one small silicon chip. On the other hand, the VLSI technology allowed hundreds of thousands of transistors to be fitted onto a single chip. VLSI में बहुत ढेर सारे ट्रांजिस्टर को hundreds of thousands लगा दिए और LSI में thousands of transistor. तो VLSI में ज़्यादा ट्रांजिस्टर लग गया एक सिंगल चिप में. As a result, the manufacturers were able to reduce the size of the computer. जिससे size computer का छोटा हो गया and made them cheaper as compared to the other generation of computers. The program in LSI and VLSI technology lead to the development of microprocessor, which became the major characteristic feature of the fourth generation computers. Microprocessor. A microprocessor incorporates various components of a computer such as CPU, memory, and input-output controls onto a single chip. The computers in this generation were designed to have a microprocessor, some additional storage chips, and supports circuitry. Figure 1 point नीचे figure दिया है shows the Intel P4004 microprocessor chip developed in 1971. Some popular later microprocessors include Intel 386, Intel 486, and Pentium. देखिए ये आपका microprocessor chip है. The term personal computer became known to the people during this era. The term PC refers to a computer that is designed to be used by an individual. Since the size and cost of the computer was decreased to a considerable extent in this period, people started using these computers for their personal work too. The storage technologies used in the fourth generation computers were also improved and they started using static and dynamic random access memory. The advantage of using this type of memory was that it allowed the computers to access the stored information at a rapid pace. तो रैम जिसका ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन को दिखाता है. And hence helped in increasing the productivity and performance of the computer. Some of the examples of fourth generation computers are IBM PC, IBM PC80, Apple, and CRAY1. The fourth generation also include the following development of graphical user interface GUI, development of new operating systems, invention of various secondary storage and input output devices, development of local area network LAN. Some of the advantages क्या हैं इनके fourth generation computers के. The use of LSI, VLSI and semiconductor technologies made these computers very powerful in terms of their processing speed and access time. The storage capacity of these computers was very large and faster, and hence they were very productive and highly optimized. They were highly reliable and required very less maintenance. They provided a user-friendly environment while working because of the development of GUIs and interactive input-output devices. The programs written on these computers were highly portable because of the use of high-level languages. They were very versatile and suitable for every type of applications. They required very less power to operate. और कुछ
प्रॉब्लम्स क्या था उनके साथ? द सोल्डरिंग ऑफ LSI and VLSI chips on the wiring board was not an easy task and required complicated technologies to bind these chips on the wiring board. चिप्स को बोर्ड पे लगाना पड़ता है. The working of these computers still dependent on the instructions given by the programmer. नेक्स्ट है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर. The different types of modern digital computers come under the categories of 5th generation computers. These are based on the ultra large scale integration ULSI. इसके पहले वाला था LSI VLSI. This is your ULSI that allows almost 10 million electronic components to be fabricated on a small chip. एक छोटे चिप पे कितना है? 10 मिलियन. नहीं, बहुत ज्यादा. 1 मिलियन में 10 लाख हो गया, तो 100 लाख हो गया. The ULSI technology helps in increasing the power and speed of the microprocessor chips and the capacity of primary and secondary storage devices to a great extent. As a result, the 5th generation computers are faster, cheaper, and more efficient as compared to the 4th generation computer. Some of the improvements or developments made during this generation of computers are: first, a development of various portable computers such as laptop, pocket computer, personal digital assistant, development of parallel processors, development of centralized computers called servers, invention of optical disk technology. इन्वेंशन, ये सर्वर आजकल हम यूज करें, सर्वर से ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं. इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड इट्स डिफरेंट सर्विसेज. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर: they are the fastest and powerful computers till date. They are able to execute a large number of applications at the same time, and that too at a very high speed. The use of ULSI technology helps in decreasing the size of these computers to a large extent. Some of the 5th generation computers are so small in size that they can be used while traveling. इनिशियली जो कंप्यूटर्स थे उनके बहुत लिए बहुत बड़े बड़े हॉल थे, उनमें कंप्यूटर रखे जाते थे. एक कंप्यूटर बहुत बड़े हॉल में था. The users of these computers find it very comfortable to use them because of the several additional multimedia features. They are versatile for communications and resource sharing. तो इतना हम लोग सफिशिएंट कर देते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के लिए. इसके बाद क्लास तुम लोग का ले लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन. डेटा रिप्रेजेंटेशन में मतलब बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और डेसिमल है. तो बाइनरी नंबर्स और इन सब नंबर्स के बारे में वो पढ़ेंगे, उनका कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे. टिल देन अगर तुम लोग का कोई क्वेरी है, एनी प्रॉब्लम, तो मुझे इसको पूछो. अदरवाइज ये तुम्हें है, इसको नोट कर लो. स्क्रीनशॉट एटलीस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स.